and we will start now. And topic for today will be linked with the identification of proteins in the solution. Yeah, but identification proteins in the solution possible through different methods. But we have one important methods, and these important methods named Biuret reaction. Yeah, Biuret reaction, and of course we will spend some time also for talking about some a little bit other type of the reaction for recognized, for example, proteins in the solution, in the samples. But also we plan to talking about Biuret reaction. Okay. Let's start. And you see in the screen the formula of Biuret reaction. And this formula shows us that Biuret reaction will pass with the peptides, yes, in the proteins, and with the copper ions, because copper ions in the second, in the two valence copper ions will be actively make linkages between nitrogen and copper. Yeah, as you see, this complex will change color to purple, because if you're talking about copper have a specific color. Its color will be blue. Usually we use for this reason copper sulfide, and copper sulfide will give us color. It's will be blue color. Yeah. Okay. And if you're talking about peptides, this reaction will be focused mostly to peptidic bonds. Yeah, what's mean peptidic bonds? I think you remember from our class, some previous lecture class, that peptidic bonds is the specific linkages between amino acids. Yeah, and when one carboxyl group of alpha amino acid will be connect with the amino group of the alpha carbo amino acids, yeah, and will be released water, yeah, and it will be hydrolysis, reaction of hydrolysis, and water will be released, and new linkages between two amino acids will created. It will be linkages between carbon and between nitrogen. And if we're talking about this reaction, we must remember that peptidic bond from some electron density of electrons will be a little bit changed from oxygen to nitrogen. And nitrogen will be charged negatively after this reaction. If you see in the screen, for example, here, you can see that in the peptide, we can see in the nitrogen or in the nitrogen will be present two dots. It will be visible in the peptide, and it will be visible to in the peptide copper complex. These two dots show us that this nitrogen have some additional
electrons here, and give these electrons give possibility to charge it nitrogen by negative charging, yeah. And it's give possibility to make some linkages between nitrogen and some compound by, for example, specific linkages in the complex. Also important point when we're talking about Biuret reaction, we must to remember that this reaction will possibility to pass in specific condition. It will be alkali condition. In the alkali condition, we can see when copper will create linkages with the peptidic bonds, but sodium, if we added for change of environment to the alkali environment, sodium hydroxide will release to OH group and sodium ions, and sodium ions also will be play important role to finalize, to fix this peptide copper complex, and will be added to this peptide copper complex. Yeah, it's necessary to remember. It's very important points. It's necessary to remember, and for this reason we use different, for example, type of some different but we must use strong base. For example, it's not just 1% just based. It will be from 10 to 14, 40, from 10 to 40% solution of base. Yeah, it's necessary to remember. When we're talking about final result, when we're talking about colored product, as you see in the screen, if Biuret reaction will pass positively, we will see specific color. This color will be, for example, purple. If we're talking about a specific color of, for example, copper sulfide will have, if you see, will be blue colored. Yeah, it's necessary to remember. Okay, and what else we must remember about this reaction? Let's see some video about what's mean this Biuret reaction and how this Biuret reaction can be recognized and can be organized for research of protein in the solution. For this reason, I recommend you come to our Moodle platform. Yeah, and in the Moodle platform, it will be available for you some specific video which give you chances to easily recognize peptidic bonds in the solution, and recognize proteins in the solution. For example, we must to come to the topic 3, proteins, and it will be
will be available some specific reaction. Aim: to detect the presence of proteins by biorit test. Step 1. Take 2 ml of protein solution, that is, milk or albumin of egg, in a test tube. Step 2. Add 1 ml of 40% NaOH solution. Step 3. Add 2 drops of 1% CuSO4 solution. Step 4. A violet color indicates the presence of proteins. Aim: to detect the presence of proteins by biorit test. Step 1. Take 2 ml of protein solution, that is, milk or albumin of egg, in a test tube. Step 2. Add 1 ml of 40% NaOH solution. Step 3. Add 2 drops of 1% CuSO4 solution. Step 4. A violet color indicates the presence of proteins. Okay. It's just about biorit test in generally. Let's see some details about this research, this identification. These two videos show us. Egg white contains a lot of protein. The test for protein is called the Biuret test. This involves adding some sodium hydroxide solution, then running some very dilute copper sulfate solution down the side of the tube. At the top of the mixture, the colour change to mauve shows that protein is present. So which of these will test positive for protein? Bread in tube 1, nuts in 2, and grape juice in 3. Both the bread and nuts contain protein. Which contains more? Okay. Experiment 106. The Biuret test for proteins. The Biuret test is an analytical procedure to identify soluble proteins in solutions. To perform this test, we need a protein solution, sodium hydroxide 10%, and a diluted solution of copper sulfate. Watch how a 10% solution of sodium hydroxide can be prepared. As this base is conditioned as pellets, it's very difficult to weigh a fixed amount due to the pellet's lack of uniformity. After a certain mass is weighed, add distilled water until you reach 10 times
the mass of the weight base. So you get a 10% solution of natrium hydroxide. Handle carefully the sodium hydroxide as it is very caustic. When preparing the copper sulfate solution, take in account its crystal water content. Weigh 0.78 grams of copper sulfate pentahydrate to have 0.5 gram of salt dissolved in 50 gram of solution. Separate in 2 beakers an egg yolk of its white. Dilute both with water to make protein solutions. Stir them to ensure homogenization. Filter both mixtures. You may envisage the preparation of a protein solution from bread. Another soluble protein you might analyze is a solution of gelatin. Milk is also suitable for the burette test as it contains casein, a water-soluble protein. To test the presence of a protein, take in a test tube 3 ml of a sample solution. Add the same amount of the 10% sodium hydroxide solution. Add a few drops of the 1% copper sulfate solution. Shake it to homogenize the mixture. If a violet color is seen, this is an indication that the analyzed solution contains a soluble protein. Repeat the procedure with egg yolk solution. The violet color is seen
even if the sample is yellow. Milk also gives a positive reaction for the burette test. Gelatine is also obviously reacting as a color change is observed. The violet color is due to the formation of a square planar copper complex with the amino groups involved in the peptide bonds, the complex being called burette. As the solutions contain copper, it is advisable to discard them in container used to collect less toxic inorganic waste. Okay, and also I recommend to see some video in the Urdu about burette test and some details about burette test. You can see also in this video some amino acids which can give positive result with the burette test. Let's start to see this video. I think it will be helpful for you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री विद डॉक्टर पीके प्रभाकर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टेस्ट है, दैट इज बायोरेट टेस्ट उसको हम बोलते हैं। और ये टेस्ट हम करते हैं नॉर्मली प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के डिटेक्शन के लिए। प्रोटीन और पेप्टाइड कहने का मतलब कि जहाँ भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा उसके लिए हम बायोरेट टेस्ट करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन कुछ नहीं है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबा सा चेन बनाते हैं जिसमें जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, और उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? तो ये हमारा एक एमिनो एसिड है, जिस एमिनो एसिड्स में हमारा एक COH ग्रुप होता है और एक NH2 ग्रुप होता है। तो पेप्टाइड्स बॉन्ड बनाने के लिए एक एमिनो एसिड्स का COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाइंड करता है, बॉन्ड बनाता है दूसरे एमिनो एसिड्स के NH2 ग्रुप के साथ विद द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, सो इट इज ए डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शन, यू कैन कॉल इट। दोनों जुड़ जाते हैं तो कंडेंसेशन, सो इट इज ए काइंड ऑफ कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड इज ए पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाता है दो अमीनो एसिड के बीच में। सो दिस पोर्शन इज पार्ट ऑफ वन अमीनो एसिड एंड दिस इज पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। सो दोनों अमीनो एसिड जुड़े होते हैं एक बॉन्ड से जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स।
ये रिएक्शन जो है वो डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शंस है। अब बाइयूरेट टेस्ट होता क्या है? इस बाइयूरेट टेस्ट का अल्टरनेट नेम है, एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोवस्की टेस्ट। ये टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अगर अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ तभी ये टेस्ट पॉजिटिव रिएक्शन देता है, अदरवाइज ये टेस्ट नेगेटिव देता है। इस टेस्ट को हम यूज करते हैं दो तरह से, क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए भी और क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए। क्वालिटेटिव टेस्ट मीन्स जस्ट टू पता लगाने के लिए कि प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं और नहीं है। और क्वांटिटेटिव जहां हम मेजर करते हैं एग्जैक्ट कंसंट्रेशन फिक्स प्रेजेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स। तो इसकी जो लिनियरिटी है इस टेस्ट की वो होती है 5 से लेकर के 150 mg/ml तक की हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट कोई भी सिंगल अमीनो एसिड्स नॉर्मली नहीं देता है, सो इट इज नॉट गिवन बाय एनी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स अलोन। जब दो अल्फा अमीनो एसिड्स ज्वाइन हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तभी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं देते हैं। सिर्फ एक अमीनो एसिड्स है जो वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जो है हिस्टिडीन। सो हिस्टिडीन इज द ओनली अमीनो एसिड व्हिच गिव्स यू पॉजिटिव बाइयूरेट टेस्ट। अब बाइयूरेट क्या होता है? नॉर्मली ये हमारा एक यूरिया कंपाउंड, अगर नाम से आप देखेंगे तो नाम से सजेस्ट होता है इसे बाय मीन्स दो, यूरिएट मीन्स यूरिया, यूरिएट कम्स फ्रॉम द यूरिया। तो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। दो यूरिया मॉलिक्यूल्स को जब हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो दोनों कंडेंस जुड़ जाते हैं विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया। यहाँ से H और NH2 निकल जाते हैं तो एक बनता है NH2CONH2, ये मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं बाइयूरेट। स्ट्रक्चर ऑफ बाइयूरेट का अगर आप देखेंगे तो हमने जो पेप्टाइड बॉन्ड देखा था जहाँ CONH2 का पेप्टाइड बॉन्ड था, तो ये स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली सिमिलर होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। इसीलिए बाइयूरेट का बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो पेप्टाइड्स की तरह ही रिएक्शंस होते हैं। ये हमारा पेप्टाइड्स है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पोर्शंस और ये पोर्शन ऑफ बाइयूरेट इज एग्जैक्टली सेम। जहां भी CO और NH के बीच का बॉन्ड होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है। तो सिमिलरली ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है बाइयूरेट के। तो बहुत सारे रिएक्शन बाइयूरेट जो देते हैं वो हमारे पेप्टाइड्स वाले रिएक्शन ही होते हैं। बाइयूरेट टेस्ट के लिए जो हमारी जरूरत होती है, हमें जो चाहिए होता है, सबसे पहले हमें एक टेस्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है। वो टेस्ट सॉल्यूशन प्रोटीन्स का होगा। लैब में, बायोकेमिस्ट्री लैब में नॉर्मली जो प्रोटीन सॉल्यूशन हम बनाते हैं टेस्ट के लिए वो होता है बोवाइन सीरम एल्बुमिन, जिसको हम बोलते हैं BSA। तो BSA का सॉल्यूशन एक चाहिए हमें। फिर चाहिए हमें बाइयूरेट रिएजेंट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें होता है कॉपर +2 सल्फेट, ये नॉर्मली पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में होता है, 5H2 इसके साथ होते हैं। दूसरा होता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, इसको हम कॉमन फॉर्म में एलएम भी बोलते हैं या फिर रॉकेट सॉल्ट भी बोलते हैं। तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कली होता है। चौथा पोटेशियम आयोडाइड। ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बाइयूरेट रिएजेंट के। हम आगे देखेंगे कि कैसे बनाते हैं और क्या क्या कितनी कंपोजिशन क्या होती है। फिर हमें चाहिए डिस्टिल वाटर बाथ की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती है। अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं 37 डिग्री के लिए, अदरवाइज नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ड्राई टेस्ट ट्यूब और पाइपेट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे बाइयूरेट रिएजेंट बनाते क्या हैं। तो रिएजेंट का कंपोजिशन क्या क्या है? तो हमें कॉपर सल्फेट चाहिए जो पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में होता है 1.5 ग्राम। देन हमें चाहिए रॉकेल साल्ट पोटेशियम सोडियम टार्टरेट 6 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 1 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन चाहिए 300 ml, एंड फाइनल वॉल्यूम हम करेंगे वाटर के साथ जो 1 लीटर का होगा। सो ये सारे कंपोजिशन जो है वो 1 लीटर के लिए है। अब इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने यूज किया, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम टाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस चारों के अपनी सिग्निफिकेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट में भी कॉपर +2 आयन जो नॉर्मली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। पेप्टाइड बॉन्ड में भी स्पेशली नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड बनाता है कॉपर के साथ। दूसरा NaOH जो होता है वो रिएक्शंस की कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को, सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाता है, बिकॉज रिएक्शन जो होगा वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही होगा। तो NaOH का काम है अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। रॉकेल साल्ट या सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो है वो चिलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे और भी अब टेस्ट में हमने देखा है, जहाँ बेनेडिक्ट टेस्ट में हमने देखा है, फेलिंग टेस्ट में देखा है, जहाँ चिलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं। तो ये चिलेटिंग एजेंट जैसे यूज करता है और ये स्टेबलाइज करता है कॉपर +2 आयन को।
चौथा पोटेशियम आयोडाइड जो ऑप्शनल सम कंपोनेंट्स है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास लैब में नहीं है तो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसका काम होता है ये कॉपर के रिडक्शन को इनहिबिट करता है। रिडक्शन मीन्स कॉपर +2 से कॉपर +1 बनने को रोकता है। तो अगर हम पोटेशियम आयोडाइड नहीं यूज़ करते हैं तो ये इजीली कन्वर्ट होंगे, रिडक्शन हो जाएंगे। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करते हैं तो रिडक्शन को स्टॉप करेगा। ये इसकी सिग्निफिकेंस है, चारों कंपोनेंट जो हम बायोरेट रिएजेंट में यूज करते हैं। अब इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? तो नॉर्मली बायोरेट रिएजेंट में हम जो कॉपर सल्फेट यूज करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे यूज होता है, बेस जैसे यूज होता है। ये कॉपर प्लस सल्फेट मीन्स कॉपर +2 रिएक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड में भी नाइट्रोजन के साथ इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट, एक कंपाउंड बनाता है वायलेट कलर का जिसको हम बोलते हैं बायूरेट कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू होता है। अगर आपके पास आपके टेस्ट सॉल्यूशन में प्रोटीन्स पेप्टाइड्स बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो वो ब्लू कलर से कन्वर्ट हो जाएंगे वायलेट कलर में बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस बायूरेट कॉम्प्लेक्स। अगर पेप्टाइड बॉन्ड एब्सेंट है तो रिएक्शन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा वायलेट कलर में। कलर की इंटेंसिटी जो होती है इस वायलेट कलर की वो डिपेंड करता है कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। अगर ज्यादा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर कलर कम होंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स कम होंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस। NaOH के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, ये एनवायरनमेंट को एल्कलाइन करता है। चार नाइट्रोजन बॉन्ड्स, नाइट्रोजन चार नाइट्रोजन चाहिए होता है, चार अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड से जो कॉपर +2 के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। हम देखते हैं आगे कैसे बनाते हैं ये चारों रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायूरेट कैसे रिएक्ट करता है। तो ये यूरिया है। जब हम यूरिया को गर्म करते हैं 180 डिग्री पे तो ये हमें अमोनिया को निकाल करके एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं बायूरेट। ये बायूरेट 4 मॉलिक्यूल ऑफ बायूरेट का ये नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर होता है वो रिएक्ट करता है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ कॉपर। तो दिस इज वन बायूरेट, दिस इज अनदर बायूरेट, दिस इज थर्ड बायूरेट एंड दिस इज फोर्थ बायूरेट। तो हर एक बायूरेट का ये जो नाइट्रोजन है ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है जिसका कलर होता है वायलेट। तो कॉपर +2 जो ब्लू कलर का था वो उसका कलर हो जाता है वायलेट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिमिलर रिएक्शंस ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस जो होता है वो पेप्टाइड्स भी देता है। ये हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये डाइपेप्टाइड है जिसमें 2 अमीनो एसिड हमने ज्वाइन किया हुआ है। बट नॉर्मली आप एन हमने लिखा हुआ समझो कि ये चेन लंबा है। तो जब पेप्टाइड्स रिएक्ट करते हैं ब्लू कलर के कॉपर +2 आयन से इन अल्कलाइन कंडीशंस तो पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उस लोन पेयर के कारण ये नाइट्रोजन इस कॉपर के साथ +2 के साथ पेप्टाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और बनाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर होता है डीप पर्पल और वायलेट। अगर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड है तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वायलेट कलर मिलेगा। अगर ये पेप्टाइड नहीं प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा और वायलेट कलर नहीं बनेगा। तो कलर वायलेट कलर बनने से हमें पता चलता है कि पेप्टाइड्स हैं या नहीं है। रिएक्शन करेंगे कैसे, तरीका क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है? पहले हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब साफ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। एक में हम टेस्ट सॉल्यूशन डालेंगे, दूसरे में हम कंट्रोल डालेंगे, एग एल्बुमिन डालेंगे, एग एल्बुमिन कहने का मतलब कि प्रोटीन डालेंगे। तीसरे में हम डिस्टिल वाटर डालेंगे। सभी में हमने 1 से 2 ml ये सब रिएजेंट डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, आइदर टेस्ट सॉल्यूशन का या एग एल्बुमिन का या वाटर का। सभी टेस्ट में हम 1 से 2 ml बायूरेट रिएजेंट डालेंगे, सबको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम आइदर वाटर बाथ में 37 पे डालेंगे या फिर रूम टेम्परेचर पे डालेंगे और उसके बाद हम कलर को ऑब्जर्व करेंगे, कलर फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो दिस इज द नॉर्मल कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर +2। ये ब्लू कलर कॉपर +2 आयन का होता है। अगर पेप्टाइड प्रेजेंट था इन द टेस्ट सॉल्यूशन तो वो कलर चेंज होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और जिसके कारण ये वायलेट कलर का सॉल्यूशन हमें दिखेगा। अगर ये कलर कन्वर्ट होता है इट मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड वाज प्रेजेंट देयर। अगर ये नहीं कन्वर्ट होता है, ये कलर रिटेन होता है, इट मीन्स पेप्टाइड वाज एब्सेंट देयर। अब इस रिएक्शन के लिए कुछ चीजें हमें याद करनी चाहिए, देखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। जैसे
एडवांटेजेस जो इस मेथड का है कि इसकी टर्न अराउंड टाइम जो है वो बहुत कम होती है, रिएक्शन फास्ट होता है, 5 मिनट में आपको पॉजिटिव पता चल जाएगा। इसके बाद डिसएडवांटेजेस जो इस टेस्ट की है वो है इसकी लो सेंसिटिविटी, और अगर आपके रिएजेंट में अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है किसी तरह से एज ए इम्प्योरिटी, इट विल अफेक्ट योर रिजल्ट, इट विल इंटरफियर विद द कलर फॉर्मेशन, तो वो आपको एक ड्रॉबैक है। तीसरा, मिनिमम 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए होता है रिएक्शंस के लिए। एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा, वो आप नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो मिनिमम 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए, जो आपने यहाँ देखा है कि मिनिमम हमको एक पेप्टाइड चाहिए जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होने चाहिए। अगर आपके पास एक ही पेप्टाइड बॉन्ड वाला डाइपेप्टाइड कंपोनेंट्स है तो वहाँ रिएक्शंस नेगेटिव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपने अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। Okay. Any questions? Any questions? Okay, I recommend you see some additional video about some other tests. This test will be named xanthoproteolytic test. And also we have some, we can start from this. Aim: to detect presence of proteins by xanthoprotease test. Take 2 ml of protein solution, that is, milk or albumin of egg in a test tube. Add 1 ml of concentrated HNO3 solution. A white precipitate is formed. Boil the solution and the color changes to yellow. After solution attains normal temperature, add 2 ml of 20% NaOH to make it alkaline. Now the color changes to orange, indicating the presence of proteins. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री विद डॉक्टर पीके प्रभाकर। आज जो हम बात इतना ही। होप आपने अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find Hello friends, welcome to my channel clinical biochemistry by Dr. PK Prabhakar. Today we are going to talk about another test for the amino acids, and that is xanthoprotease test. This is a test which normally we are doing for aromatic amino acids. So we are going to see first what is
So what is aromatic amino acids? I think it's about aromatic amino acids. It's not about protein. But as you see, if you're talking about by a test to protein, we can talk about color reaction of proteins, for example. Yes, you can see here. But some protein test also can be some test to amino acids. Okay, let's see principle. I think we will see principle. We will not really see all this. Okay, let's start to see. We are having 3 amino acids, which is aromatic. So that we are going to see it. So first, what is xanthoprotic test? This test is specific for the detection of aromatic amino acids. I have already told you this is a test only for the aromatic amino acids. What is aromatic amino acids? So aromatic amino acids are those amino acids where R groups is having a benzene ring or aromatic nucleus. So, and this xanthoprotic word is coming from the Greek word xanthos, which means yellow. And in this test, we are going to get yellow color during the result, during the experiment, during the observations. So, because yellow color, so that's why it is called a xanthoprotic test. This can be detect amino acids in any form. Either we are having aromatic amino acids in the free form. Free form means only we are having amino acids, single amino acids, or amino acids forms of proteins. So amino acid will be in any forms. This will give you the positive test. Now, the presence of tyrosine and tryptophan preferably means when we are going to perform test, tyrosine and tryptophan gives positive test, and very easily it gives positive test, whereas phenylalanines, that is very weak test, it will be weakly detected, it is not very easily detectable by this test. So what is aromatic amino acids? Any amino acids which contains a aromatic group as a R group, that is derivative of benzene. So these are the 3 amino acids, that is phenylalanine here, tyrosine and tryptophan. Already I have told you this is alpha carbon, this is alpha carbon, this is alpha carbon, because alpha carbon is having NH3 groups. So this is alpha carbon and this is R group. So this 3 amino acids is having aromatic group as a R group. Yeah, aromatic benzene derivative as a R group. So this is phenylalanine, which is having this R group, tyrosine is having this R group, and tryptophan is having this R group. The specific feature, if you'll see it, this R benzene ring and this benzene ring is activated benzene ring, means it is easily reactable, whereas this benzene ring is non-activated. So phenylalanine does not have an activated benzene ring, so that's why it is not going to react it. Further, we are going to see it. So these are the R groups which we are going to see during the test. So the principle of this test is normally, because we have seen R group is a benzene ring, so the properties of amino acids, all the amino acids, whatever 20 amino acids we are having, because this portion is common in all the 20 amino acids. So if I have to differentiate 2 amino acids, so that differentiation can be done only on the basis of R group. Like I have to differentiate between glycine and phenylalanine. I have to differentiate between alanine and tyrosine. So alanine and tyrosine is having this portion is the common thing. They are only differing in their R groups. So we can differentiate those 2 amino acids only on the basis of their R group. So R group, because this 3 amino acids is having R group as a benzene ring, so the properties shown by these amino acids is the same properties which a benzene group is showing, benzene derivatives are showing. And one of the most important chemical reactions shown by benzene ring is nitration. Nitration means addition of NO2 into the benzene ring. So whenever we are having a reaction, benzene reacts with nitric acid in acidic environment, it
is going to be nitrated. Nitrated means NO2 group will be added onto the benzene ring. That is called nitration. And nitrated benzene, nitrobenzene we call it, that is having yellow in color. That is yellowish in color. So that's why nitrated, after this reaction we are going to get yellow color. So the amino acids like tyrosine and tryptophan, which is having activated benzene ring, I have already told you, because those two rings are activated and rarely undergo nitration reactions. Whereas the amino acid that is phenylalanine, which is having aromatic groups, aromatic benzene ring is there, but that contains, that benzene ring is non-activated. Because this is non-activated benzene ring, so that's why it does not react very easily, and reactions normally gives positive reaction in normal circumstances, in normal conditions. So this is a nitration reactions. This is a normal benzene ring which reacts with nitric acid in the acidic concentration, acidic environment. So NO2 group is going to be added onto the benzene. This is nitrobenzene and its color is yellow, and H2O will be. So this is nitrobenzene. Same properties will be used in this case also, in case of xanthoprotic test also. Like this is a tyrosine molecule. This is tyrosine amino acid. This is COOH. This is alpha carbon. Sorry. This is alpha carbon, and this alpha carbon is going to having NH2 groups H, and this is R groups. So this R group, in case of tyrosine, is going to be nitration reactions. Means in the presence of HNO3, that is acidic conditions, it is going to be nitrated. So this NO2 group will be added onto the benzene ring. Means this is a nitro derivative of tyrosine, and this color of this one will be yellow, and that yellow color we are going to see it. So this all these reactions for tyrosines, where this is going to be nitrated, NO2 group will be added in the presence of acidic environment. Similarly, this is tryptophan, where this is the benzene ring, and this benzene ring is going to be nitrated in the presence of acidic conditions. So whenever the principle of this test is, if you are going to heat a benzene ring, benzene derivatives, or the aromatic amino acids in the presence of nitric acid donates, it gives NO2 groups which will be added to the benzene ring of the amino acids, and amino acids, we are, as a result we are going to get nitro derivative of amino acids, and nitro derivative of amino acid is having yellow color. That yellow color we are going to see in the result, observe into the result. In case of phenylalanine, this phenylalanine is having benzene ring, but this benzene ring is non-reactive benzene ring. It is a non-activated benzene ring. So that's why this benzene ring is not going to have any kind of nitration reaction, and it gives a negative result. It gives a negative result. We are going to get it. Now, what are the requirements we are going to get? We require test sample. Test sample will be either proteins or the amino acids, which we are going to do test. Then we require concentrated nitric acids. We require 40% NaOH. I will tell you, I didn't tell you what is the use of NaOH. I will tell you what is the use of NaOH. Distilled water, water bath, dry test tube, and pipettes. Now, what is the procedures? First, we are going to take two test tubes. One for our test, and second one will be for a control. In both the test tubes, in the test tubes, we are going to put our test sample. Test sample means either it will be protein sample, it will be amino acid sample. So test sample we will put in this one 2 ml of test sample into the T test tubes, 2 ml of distilled water into the control sample, and then 1 ml of nitric acid in both the test tubes. So now both the test tube is having 3 ml content. Mix, shake well, heat the test tubes for 2 minutes, and cool under the running tap water. So under the tap water we have to cool it and observe for any color change. If this test sample will have tyrosine, tryptophan, it will give you yellow color. If yellow color forms in this test sample, it means tyrosine and tryptophan or amino acids protein which contains tyrosine tryptophan is present there. If you are not going to get any color, it will be clear solution. It means the sample does not contain tyrosine, tryptophan, or any proteins which contains tyrosine and tryptophan. Whereas in case of control, because we have distilled water, so it will give you the negative test. It will be clear solutions. Once we have got yellow color solutions, then now we are going to add few drops of NaOH.
the use of this alkali makes them chargeable, means it will be going to form a salt. So because of this formation of nitro derivative of amino acids converted to the charged forms, it will be ionized forms, and because this ionized forms convert yellow color into the orange color. So if you are having test sample is having proteins, you are having a tyrosine tryptophan containing proteins or tyrosine tryptophan amino acids, the yellow color will be converted into the orange color. If you don't have all those things, it will not be converted. So this is our test. As a result, we are going to get this is the positive samples and this is the negative result. So if you are having, we will get the yellow color solutions. After the adding of NaOH, you will get the orange color solution. If you don't have anything, you will get the clear solutions. So this is your positive and negative result for the test. Now there are some points which needs to be remembered for this test is, it is a test for aromatic amino acids, so preferably given by both tyrosine and tryptophan only, not for phenylalanine. Why? Because tyrosine tryptophan is having activated benzene ring, aromatic ring, whereas phenylalanine does not have activated benzene ring, so that's why phenylalanine does not give the positive test. Tyrosine tryptophan gives positive test. Tyrosine tryptophan are more polar than the phenylalanine. Why? Because tyrosine tryptophan is having activated benzene ring, aromatic ring, whereas phenylalanine does not have activated benzene ring, so that's why phenylalanine does not give the positive test. Tyrosine tryptophan gives positive test. Tyrosine tryptophan are more polar than the phenylalanine, so it will be polarized, it will be going to be charged. And this reaction is one of the reaction that occurs if you spill a concentrated solution of nitric acid onto your skin. Like if nitric acid falls on our skin will be yellowish, because on our skins we are having a proteins and that protein contains tyrosine and tryptophan. So once nitric acid falls on our skins, the proteins which is present in our skins will be going to do xanthoprotic reactions. Xanthoprotic reactions means nitration reaction will occur, so the skin will be yellow in the color because of this nitration of the tyrosine tryptophan amino acids. So that's all for today. Hope you have understand it. If you have any query, any comments, you can write in the comment box. If you have not subscribed my channel, please subscribe it. If you like the video, press the like button, and you can press the bell button also, so that you will get all the notification for the Okay. In finally, I want to show you some video about, it just repeat will be, but based in this video, we will talk about some specific reaction, okay? Okay. So let's do this. So let's do the experiment with virus. In this case, as we said, we have 4 proteins, which is casein, gelatin, peptone, and albumin, which expects them to give positive results with body color, and here amino acids, which expected to get blue color. So, what shall we do? First, our reagents, which is first one is 10% sodium hydroxide, and here we have 1% copper sulfate. The order of them is so important. We should add first around 1 ml
of sodium hydroxide to each test tube. Then mix well. And finally, turn to the copper sulfate, just 2-3 drops. Let's see what we're gonna get. Can you see? Violet color with casein. Let's see what about gelatin. Still violet color with gelatin too. The split tone, violet color, maybe pinkish color, and with albumin, we're still getting violet color. So let's see what we're gonna get with the amino acid. It's a blue color. So now let's see the difference between four. The fourth left-hand side, to my side, are violet, which are proteins. The one without any label is blue, which is amino acid. So now we can differentiate between any proteins and any amino acid. And thank you. The fourth left-hand side. Okay, we will stop in this point. It will be connect with the, as you see here, it will be connect with the, for example, result and some positive and negative results you can see here. And if we come back to our PowerPoint presentation, yeah, as you remember, we can see this page again, and as you see, two test tubes give us negative result, and 3 give us positive result. And as you remember, peptone is also derivated, secondary derivated proteins, where all peptidic bonds was wrapped. And this wrapping give us chance to see in this result negative result, yeah, negative test. Okay, any question? Any question? Any question? If you have no question, I have some question for you. Let's start to see. First question will be this one. How many ninhydrin molecules participate in the reaction with the 1-alpha amino acid for producing purpur-colored complex? Please tell me.
Please go on to sharing with me your ideas. Okay, some students do it. Okay, let's see. Okay, let's see. Yes. Hafiz Noman, it's correct. It's true, will be. Okay, next question. Next question will be connected with this task. How many amino acids will participate in the how many nucleotide molecules will participate with what molecule of beta amino acids is for producing of purple colored complex? Who want to answer me? Who want to answer me? Any idea? Any idea? Who want to answer me? Any ideas? Okay, not correct, because when we're talking about alpha amino acids not will be create the purple colored product, because it's, I mean, a beta amino acid, because beta amino acids not will be react with this, not will be produced purple colored product. Okay, no, it's not correct. On not will be produce the purple colored product. Okay, next question.
How many ninhydrin molecules participate in the reaction with the one molecule of the proline? Tell me, please. Any ideas? Any ideas? Okay, okay, thank you. More than one, it's not correct. Only one, because you can see here how this reaction will pass. As you see in the screen, with the alpha amino acids, two molecules will participate, it's correct. But if we're talking about ninhydrin connection with the proline, it will be only one molecule, and one molecule give us chance to see other color. It will be yellow, orange colored product. Okay, thank you for your attention. Now we spend our time for see your attendance. It will be attendance specifically for your group 21. Yeah, just a second. Okay, I have no list of these students. We can make it personally with you. Okay, and for this reason, I will give you a chance to see screen. Okay. Так, group leader, please send me in the Zoom chat some names of students which not added in this list. Isa, Arslan. Isa here. Abuzar. Yes, sir. Yes, okay. Arslan Abuzar. Are you here? Farhan. Abuzar. Farhan Abuzar, are you here? As you know, I need to hear your voice. If you not answer me, it means absent.
Absent. Hafiz Noman Ali. Yes, sir. Here, okay. Hafiz Noman. Today, some positive marks. Okay. Next. Kiran Riaz. Yes, sir. Okay, good. Next, Mahin. Yes, sir. Good. Muhammad Shahid. Muhammad Shahid, are you here? Yes, sir. Yes, thank you. Numan Salim. Yes, sir. Okay, thank you. Numan Salim. Amar Amjad. Yes, sir. Okay. Who are your group leader? Who are Yes, sir. Shahid, it's you? Yes, sir. Muhammad Shahid. Muhammad Shahid, please check the list which is available now in the screen. And if you find some students who are not present in this list, I mean absent today and I not put the name these students in this list, please inform me by chat. I will edit it. Okay. Okay, sir. Please do it just now. Okay. Any questions? If you have no questions, it means we can finalize today our class. And please come to our class in the next time for our next practical lecture class. Okay. Muhammad Shahid, what do you want to tell me? Is it all, or you have some students who not added? If it's necessary, we can check it later. If now you have no possibility to inform me about some additional students. If yes, if it's okay, I think we can stop today. Thank you for your attention, and bye-bye.